20 डेटा मुझे 19 दिख रहा है, तो मेरी किसी काम की रिपोर्ट ये नहीं है। सो कैसे हम मॉडल करेंगे जिससे हमारा डेटा एक स्ट्रक्चर वे में हो जाएगा। तो उसके लिए आपने सुना होगा डेटाबेस में स्टार स्कीमा, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और तरीका है। पावर भी खुद मॉडलिंग करने का जो है ऑप्शंस है, सो हम क्यों नहीं उसका यूज़ करें। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। सबसे पहले मैं इसको डिलीट करते हैं, फिर से बनाते हैं साथ। लेट्स डिलीट एवरीथिंग। सबसे पहले कोई भी रिपोर्ट बनाने से पहले गो टू एक्सेल यूज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमें स्मॉल डेटा सेट यूज करके और इसको यूज करना है, जिससे कि हमें से इजीली हम अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या डेटा है हमारा। इसलिए मैं स्मॉल डेटा सेट यूज करता हूँ, बाकी बाद में यूज करेंगे जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। अब इसको हम जैसे मैंने आपसे बोला था पैरामीटर पे करेंगे। सो आते हैं यहाँ से, मैंने कहा एक्सेल पाथ, चाहे शोर्स पाथ, वट एवर ऑप्शन यू टू यूज, गो अहेड एंड यूज इट, देन प्रेस ओके। अभी पास एनी वैल्यू एंड देन ओके। अभी मेरे पास पाथ नहीं है, तो यहाँ से उठाएंगे, ये मैं सोर्स पे गया। ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यू ऑलवेज ट्राई दैट। ओके, क्लिक ऑन इट, यू प्रैक्टिस, क्योंकि अगर नहीं करोगे आप तो वो हैबिट छूट जाएगी और किसी दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो प्लीज़ ट्राई टू यूज इट। थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन जिस दिन बेनिफिट समझ में आ जाएगा ना आपको, तब 25-35 मॉडल मिलते हैं, तब प्रॉब्लम होती है, एक में नहीं आता, ठीक है। अब आते हैं इसको, अब स्टार्ट करते हैं इसको मैंने मेन मॉडल मान लिया है, ठीक है। मैं इसको बना रहा हूँ, यहाँ पे दो चीज़ें, डुप्लीकेट है, रेफरेंस है। सो डुप्लीकेट और रेफरेंस में अंतर क्या समझ जाओ। रेफरेंस मतलब क्या होगा कि मैंने किसी चीज़ का एक आपको एक्सेस दे दिया कि आप मेरा, जिसे यहाँ पे पॉइंट ले लो, देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैंने पहले रेफरेंस क्रिएट किया और फिर मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर रहा हूँ। इसको लिखते हैं रेफरेंस और अंडरस्कोर डुप्लीकेट। देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, चलो यहाँ पे फाइनेंस में आए, इसका देखो सोर्स क्या है, इसमें हमने एक्सेल पाथ दे रखा है। यहाँ पे क्या सोर्स है, यहाँ पे तो कोई सोर्स ही नहीं है। कहाँ चेक करेंगे इसको, हम एडवांस एडिटर में चेक करेंगे क्या सोर्स है इसका। यहाँ पे क्या सोच रहा है, सोर्स फाइनेंशियल डेटा सेट ही हमारा सोर्स है। यानी जब भी हमें डेटा डिमांड करेगा सिस्टम, तो कहाँ जाएगा, वो फाइनेंशियल सोर्स के पास जाएगा, यानी इस डेटा मॉडल के पास आएगा डेटा के लिए। कौन, रेफरेंस। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, देन डुप्लीकेट पे आओ, क्या करता है। डुप्लीकेट ने क्या किया है, देखो ये तो वही पाथ यूज करा, फाइल पाथ, यानी आपका जो एक्चुअल सोर्स है उसको कौन पिंग करेगा, डुप्लीकेट। बट रेफरेंस क्या करेगा, इसको हमेशा पिंग करेगा, डेटा आप मुझे दो। यानी इसमें कोई चेंज होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। सो ऐसे में आप इस चीज़ को प्रोसेस कर सकते हो। तो जब भी आप क्या नाम है, रेफरेंस और डुप्लीकेट कब को क्रिएट करते हैं, आई गिव आइडिया। सपोज मेरे पास जो डेटा है, ठीक है, उस डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है, बट मुझे लेस स्पेस है, ठीक है, तो मैं डुप्लीकेट यूज़ कर लूँगा। बट मर्जिंग में प्रॉब्लम आती है, चाहे रिलेशनशिप मर्जिंग प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये डिस्प्ले नहीं होता कभी कभी। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, कैसे क्या कर सकते हो आप। तो कभी यूजली डुप्लीकेट से क्या होगा, डुप्लीकेट की प्रॉब्लम ये है कि ये हमेशा मेन सोर्स को पिंग करेगा, जैसे एक्सेल को पिंग करेगा बार बार, चाहे सोर्स को पिंग करेगा, तो भी प्रॉब्लम है। ये चीज़ें आपको देखनी है ध्यान से, ठीक है। और कभी भी स्मॉल डेटा सेट यूज करो। नेक्स्ट चलते हैं, मॉडलिंग पे आते हैं। तो मैंने इसको रेफरेंस को छोड़ देता हूँ एज इट इज़, और इसको मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे मुझे ना दिखे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो ऑप्शन पे, इनेबल लोड। देखो इनेबल लोड का क्या बेनिफिट है, और मैंने क्या किया यहाँ पे आके इंक्लूडेड रेफरेंस एंड देन अनचेक इनेबल लोड। ये देखिए अब क्या हो रहा है, इसमें कितने हैं, 1 2 3 डेटा सेट है। क्लोज एंड अप्लाई, लेट मी चेक इट। यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, एक ही दिख रहा है, सिर्फ एक दिख रहा है। हाँ, क्योंकि हमने क्या किया, इनेबल लोड कर दिया। इसका मतलब हो कि मेरे पास 2 4 10 हो, मैं जितना चाहे उतना ही कंट्रोल कर सकता। इसका फायदा है कि सपोज करो मैंने 5 टेबल डाउनलोड किया और मुझे उसको एक ही मॉडल बनाना है, तो मैं एक बना के उसको डिस्प्ले करा दूंगा, बाकी मेरा बैकग्राउंड में चलता रहेगा। बट एक चीज़ यहाँ पे याद करने वाली है, विच इज
यहाँ पे एक ऑप्शन है रिफ्रेश का। अगर आपको वो मॉडल यूज करना है तो यहाँ पे रिफ्रेश वाला ऑप्शन मस्ट इनेबल इट, अदरवाइज इफ यू नॉट चेक इट डेटा विल नॉट रिफ्रेश एंड देयर इज नो बेनिफिट। सो ऑलवेज रिमेंबर यूज इट एज ए रेफरेंस। ठीक है, इसको चेक कर दो। अब यहाँ सर पे इसमें ऐसा हो सकता है कि जैसे कि इनेबल लोड हम नहीं करते हैं लेकिन रिफ्रेश पे क्लिक करते होता रहे मतलब। हाँ हाँ, वो वही वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। ओके ओके। तो इसके लिए सबसे पहले इनेबल पे क्लिक कर दो, और सॉरी, उसके बाद से इनेबल को अनचेक कर दो। और इसमें थोड़ा सा ना इटैलिकन मॉडल में दिखेगा नेम इसका, बट वहाँ दिखेगा। हम्म। अभी दोनों रिफ्रेश में मैंने लगा दिया, देखो दोनों रिफ्रेश होते रहेंगे, डेटा मिलता रहेगा हमें, बट यह दिखेंगे नहीं। ये बेनिफिट है। ओके सर। ठीक है, ये समझ गए। हाँ नेक्स्ट जी सर। मॉडलिंग पे, इनको मैं नहीं टच कर रहा, इनको आप एक्सपेंड कर लें क्योंकि आपके फोल्डर में तो चेक करना है तरीका। लेट मी डुप्लीकेट इट। मैंने इसको लिख दिया मेन। ये मेरा मेन डेटा सेट है, इसको भी नहीं दिखाऊंगा मैं डेस्कटॉप पे, क्योंकि इसको मैं सोर्स बना रहा हूँ तो इससे मल्टीपल फाइल रिफ्रेश करेगी या इसको खींच करेगी। सो मैं इसको मेन नहीं बना रहा हूँ, मेन इसको बना रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैंने मेन तो बना लिया, मेरे सामने चैलेंज कर रहा, मैं नहीं, ये मेरा डेटा बहुत सेंसिटिव है, मैं नहीं चाहता क्लाइंट जाने कि मेरी लोकेशन, मेरा सेगमेंट, मेरा प्रोडक्ट, मेरा डिस्काउंट क्या है, मुझे नहीं दिखाना क्लाइंट। तो मैं क्या करूँ, बोल दूंगा नहीं दिखा सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हम्म। मैंने कहा कि चलो इसका कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। तो मैंने सबसे पहले इसी को रेफरेंस ले लिया। रेफरेंस बना के देखते क्या, मैंने दे दिया सेगमेंट टेबल, पहला सेगमेंट टेबल बनाते हैं। कॉपी सेगमेंट टेबल, सेगमेंट टेबल, और इसमें मैंने इस सारे ऑप्शंस को यहाँ पे आए, रिमूव अदर, इस कॉलम को छोड़ के बाकी सब हटा दो। रिमूव अदर, अगर मैं रिमूव क्लिक करूँगा तो क्या होगा, देखो रिमूव कॉलम क्या हुआ। तो सेगमेंट ही रिमूव हो गया। अच्छा, ठीक है, बट मेरा तो ऑब्जेक्ट कुछ दूसरा है, क्या है। अदर कॉलम्स को रिमूव करना है। हाँ, ओके। समझ में आ गया दोनों। हाँ जी सर। के बाद से मुझे ये समझ में नहीं आया कि मुझे ये सारे डुप्लीकेट कैसे हटाऊं। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट लिखा, लेट्स ट्राई, क्या कुछ हेल्प करेगा मेरी, लेट्स डू इट। हाँ, ओके। क्लियर हो गया, मतलब सारा हट गया, कुछ नहीं बचा है। ठीक नेक्स्ट है। करते हैं। अब क्या हुआ, अब गया तो ठीक है यार, बट ये क्या, ये तो हमारे किसी काम ही का नहीं है। हम वहाँ नेम देंगे तो नेम ऐसे डिस्प्ले करेगा नहीं। मैंने कहा चलो इसको एक सोल्यूशन निकालते हैं। मैंने कहा मुझे एक की दे दो इसके साथ। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, की ऐड कर लेते हैं। तो मैंने दे दिया सेगमेंट आईडी, लिख दिया सेगमेंट आईडी। ओके। ये मेरा काम हो गया, मुझे सेगमेंट टेबल मिल गया, सेगमेंट के साथ आईडी मिल गया। अगर मैं इसकी जगह इस ये आईडी पास कर दूं तो मेरा काम चलता रहेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। ठीक है, हाँ जी सर। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चलो अब मैं क्यों बर्दाश्त करूँ इसको, नहीं मुझे झेल, ये मुझे मेरे किसी काम का नहीं है, लेट मी रिमूव इट द सेगमेंट एंड नाउ यूज द सेगमेंट। सी दिस, यहाँ पे सेगमेंट नहीं दिख रहा मुझे, क्यों बता सकते हो, मैंने भी बताया है। सर सेगमेंट रेफरेंस टेबल आपने क्रिएट किया हुआ बिल्कुल है। सही। सो इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी अगर ऐसा होता है तो हमें रेफरेंस क्रिएट, जहां मर्ज वाला सेगमेंट नहीं क्रिएट कर सकते। तो देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम इसी को उठा लेंगे, इन से उठा लेते हैं इसको, एंड सेगमेंट टेबल में आते हैं। ये देखो सोर्स मेन ले रहा है, ठीक है, बट इसको उड़ा ही देता हूँ, डुप्लीकेट ही हटाता हूँ क्योंकि फिर एरर होने की प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे डुप्लीकेट दे दो। तो लिमिटेशन समझ में आ गई ना, क्या रेफरेंस की लिमिटेशन। हाँ जी सर। ये पता है इंटरव्यू क्वेश्चन है, रिमेंबर इट, अगर कभी भी किसी ने पूछ दिया तो याद है बताना है। ठीक है, यहाँ से रिमूव अदर, रिमूव डुप्लीकेट, परफेक्ट, ऐड कॉलम, गिव द इंडेक्स। अगर कोई बोलता है यूनिक की क्रिएट करो तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, सेगमेंट आईडी। ठीक है। इंडेक्स कॉलम से। हाँ, इंडेक्स कॉलम से। कस्टम कॉलम भी है, कंडीशन बेस्ड कॉलम है, बहुत बहुत सारे कॉलम बताएंगे करके। अब तो हो गया, बस मुझे ऐसे करके कंट्री प्रोडक्ट सबको बनाया, तो मैं पहले इसका बना लेता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी ये समझ में आ गया ना सेगमेंट कैसे बनाए। बिल्कुल सर। हाँ, तो वही चीज़ नेक्स्ट आते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कंट्री
remove this one, remove other, remove duplicate, give me index. This time I wanted to use the custom, so I am starting point 100, increment 1. Now country ID. Perfect. Now move to the here क्योंकि usually अच्छा लगता है देखने में first ID. Then we have the third duplicate and I want product. So here remove other, remove duplicate. Email product आ गए. Give me any ID. I wanted to give from 200 plus 200 and 1. Perfect. And I wanted to give the product ID. Product ID. यही मॉडलिंग सबसे इम्पोर्टेंट होती है. ये मेरा होगा प्रोडक्ट टेबल. सर जब भी हम प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे तो हमें ऐसे ही करना होगा ना? हाँ बिल्कुल यही लॉजिक ही है, क्योंकि कोई डेटा आपको नहीं देगा यार. कोई भी डेटा आपको ऐसे फॉर्मेट में देगा ही नहीं. वो तो ऐसे देंगे आपको, ऐसे रोटा उठा के दे देंगे, मुझे ये चाहिए बना के दो. उनसे क्या मतलब, आप क्या करोगे? यही चीज़ें लोगों को नहीं आती है. अगर वो नहीं आएगा तो आप, पता क्या होता है, मैंने देखा है, मैंने यूट्यूब देख के सीख लिया. यूट्यूब पे कोई सीक्वेंस नहीं होता डेटा का. अरे वीडियो से कोई सीक्वेंस नहीं होता. जो बंदे क्रिएट करते हैं, यार देखो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. जो नहीं पढ़ाते, जो खाली यूट्यूब पे काम करते हैं, तो अगर नरेंद्र मोदी से कहोगे कि जमीन पे आके देखो क्या चल रहा है, कौन कौन कहाँ कहाँ क्या क्या बन रहा है, किसी ने जो ऑफर दिया आपने, तो उनके बस की बात है कि चेक करेंगे, पूरी इंडिया का चेक कर पाएंगे? नहीं. हर बंदा का अलग कॉन्सेप्ट है. अब ठीक है. उनको बस अपना प्रोडक्ट बेचना है, ऐसे नहीं हो पाता. इस वीडियो को मैंने वीडियो 100 वीडियो बना रखी है, तभी मेरे पूरे कॉन्सेप्ट भी इसमें कवर नहीं है. मेरे खुद के कॉन्सेप्ट कवर नहीं है. लेकिन ठीक है, वही चीज़ें हैं. इस चीज़ को आपको स्लोली ग्रेजुअली इम्प्रूव करना होगा. और ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया आपको तो आपका काम खत्म, ऐसा नहीं. आपको एक नियम बनाना होगा और उसको शेड्यूल फॉलो करना होगा अगले 6 महीने तक. सो एवरी 2 आवर आपको बैठ के 24 आवर्स में 2 आवर आपको पावर भी देना होगा, अगर आप चाहते हो कि एक सर्टेन लेवल का हो, नॉलेज हो जाए. और एक दिन में भी नहीं होता. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने भी एफर्ट किया, ऐसा नहीं है. नेक्स्ट आते हैं मेन पे. अब हम यहाँ पे आके, मुझे सेगमेंट, कंट्री, प्रोडक्ट मुझे नहीं दिखाना किसी को. सो मैंने क्या किया, यहाँ पे आया, सबसे पहले होम पे. ये देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मर्ज क्वेरी, मर्ज न्यू. मर्ज में क्या हो, जिस टेबल में उसी में मर्ज करना चाहते हो उसी में कर सकते हो. बट मर्ज न्यू है तो न्यू भी कर सकते हो. मैं फिलहाल मर्ज न्यू कर रहा टेस्टिंग के लिए. मैंने कहा मर्ज से न्यू करना है. सो सेगमेंट टेबल लिया, और देखो इसमें तो मेरे पास आईडी तो है नहीं, तो मैं सेगमेंट से सेगमेंट को लिंक कर दिया. बिल्कुल एग्जैक्ट 700% रो मैच. ठीक है, एग्जैक्ट. ओके किया. यहाँ पे क्या आ गया, देखो आईडी. सिंस सेगमेंट टेबल तो ऐसे ही लेते, यहाँ पे मैं आईडी ले लिया, बाकी हटा दिया. मुझे जरूरत ही नहीं किसी की सेगमेंट आईडी की. अगर मैं ऐसे सेगमेंट हटा दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट आते हैं, ये मर्ज न्यू का कॉन्सेप्ट है. हम आपको उसी में सिखाएंगे, बट मैं ये लिख कर दूँ ताकि आपको जब देखो, जब करने लगते हो ना तो चीज़ें भूल जाती हैं. ये नेम रहेगा तो आपको नेमिंग करने से पता रहे कि मर्ज न्यू है. अब मर्ज करेंगे सेम टेबल में, इसमें मेन में आते हैं. मर्ज में याद रखना, जिसको भी जिसमें मर्ज करना उस टेबल को आपको सेलेक्ट करके प्रोसेस कर क्लिक कर सकते हो. यहाँ पे एग्जांपल के लिए मुझे मेन में मर्ज करना है तो मैं मेन ही सेलेक्ट करूँगा. अब मुझे सेगमेंट मर्ज करना है इसमें, तो मैंने मर्ज इन सेम टेबल. सो टू दिस, गो टू द सेगमेंट, link with the segment table, then after segment column, then click OK and go to the here and select the segment ID, remove other and click OK, expand it. Now successfully got it. Move to the next part, which is merge same country, use the product. Okay, use product, don't worry. And then it has the same rows column, and see this here you have many options. Left auto join, left right right join, full auto join, inner join, left join, right join. सो इसको हम कवर कर लेते हैं, तब चलेंगे आगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेसिक है, दैट यू रिक्वायर्ड. ठीक है, अच्छा मर्जिंग कर देते हैं तब बताते हैं आपको. ठीक है, लेफ्ट ऑटो जॉइन ऊपर से लेकर कर लेते हैं, इसको बीच में छोड़ना ठीक नहीं है. नेक्स्ट एक्सटेंड इट, प्रोडक्ट आईडी, merge query, then we have the country name,
कंट्री, सेलेक्ट दिस कंट्री। अब इस बार थोड़ा सा हटके करेंगे। ये देखो आप यहाँ पे, ये देखो लिखा यूज ओरिजिनल कॉलम विद प्रीफिक्स। इसका क्या मतलब है? मैंने इसको क्लिक कर दिया और हटा दिया इसको। मुझे ये कॉलम चाहिए तो है, मेरे पास तो चाहिए नहीं, मैंने ओके कर दिया। ये देखो क्या हो रहा है, कंट्री डॉट वन डॉट कंट्री आई डी। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे ये टेबल का नेम मेरा है, कॉलम नेम ले रहा है। देखो, let me give you an example. Suppose you are working on the data set where we have 20,000, we can say, categories in the data, and that have a row level. I am trying to convert in the, you can say, column level, or maybe column data I convert in the row level, which is called pivot and non-pivot. So in that scenario, what happened? You have to identify that which column belong to which table and which column belong to which table. I'll show you one of scenario which we have already in report builder data. So in that scenario, you got a difficulty that how should I fulfill it. So in that scenario, you must use the, we can say, pass the reference as a column name. Powerbi report, welcome tail, welcome tail. ये जो the reports is belong to the, okay, I don't want to take any respect since I'm talking to you. We are on YouTube live. Don't worry, this data will be removed, sensitive part will remove it. Okay, okay, it's loaded now. Oh, I can't use it because it has the reference. Now, see this. This table has the conditional acceptance actual CRAQ 6 days. This is not just column name. Conditional accept is a table name and actual is a date. Create day 6. This is a column name. Okay. So why we did it? Because it's need the date. So I unpivot the column so that information come on the row to column level, and then pivot it. So that is it's coming this way. So मैंने कॉलम को क्या कहता है पिवट कर दिया, तो रो कॉलम पे, फिर कॉलम को पिवट करके रो लिखे, क्योंकि मुझे डेट चाहिए थी कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब कोई डेटाबेस में से तो क्रिएट करके देगा नहीं कि जो रो लेवल की इंफॉर्मेशन है वो डे लेवल पे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने इस रिपोर्ट को बनाने के लिए हमें विवस्था, मतलब मजबूरी में हमें काम करना पड़ा है। फॉर्मल एक्सेप्टेंस जैसे कॉलम में एक्सेप्टेंस डेट, इस कंपनी ने डिलीवरी का अलग कॉलम था तो हमने डेट एक्ट लगा दिया उसमें। ये सारा कॉलम हमने बनाया हुआ मैनुअली, इसको चेंजेस किए थे। सो ये ऐसी रिपोर्ट बनती है। ये रिपोर्ट बिल्डर में यूज किया था, एक्चुअली ये सेंसिटिव डेटा है। सो बिल्डर से ये कंपनी का डेटा है। सो यहाँ पे जैसे कोई भी कॉलम हो गया तो हम कॉलम में अगर हमें टेबल नेम भी पास करना है, सो मस्ट गो टू दी पास द टेबल नेम एज वेल। सो लेट्स रिमूव इट and going to select only country ID. You can test yourself, there will be any problem. So हमारे पास आ गया segment ID, product ID, country ID. If I remove 3 column, does any impact? No, it doesn't impact anything. No, sir. I can make relationship and I can use it with the same table. Next, say this. We can say here we got the error. So let me use the final sample. Oh, I'm using the margin. सर आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, मैं समझ गया हूँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। Okay. Now this part is done. This is the modeling. So this is called star schema. Okay. And now before proceeding, let me close and apply. So first apply it. See, this is loading with models. In database concept, you know that this is the model tab. Okay, there are three in Power BI: report view, data view, and model. Okay, let me show you
here country, main table, segment, and we have a country. So already have relationship with that, and let's add the country ID with the country ID. Product ID, segment ID. Why I am not able to see the country ID? Let's check here. Name, country. Oh, I think look like it's deleted. आई थिंक सर हमने डिलीट कर दिया उसको आई थिंक Maybe. Let me check what we have done. Oh, deleted. So let me add it. Just remove the country ID from this. Done. This is the M query, but do not practice right now. Practice once you have good knowledge. Okay. Otherwise, it's case sensitive. It gives the error in your report. Okay. Now see this relations has been created, and this is called star schema. Okay. This is the fact table. These are the dimensions. This way you can create in Power BI too. Okay. Next quick question for you. If I have a two fact table, can I use it? Yes, you can. Even if three, you can use it. Doesn't matter for the Power BI. You only must have the primary key and foreign key in your data model. Then you can use it. We don't have any problem. We need only if your logic was there and your key is there, then don't have any problem. You can use maybe 2, 3, 4. Doesn't care about the Power BI. Power BI need only relationship. If you fulfill it, you can use it. Now. सर अगर दो फैक्ट टेबल भी होंगे और तो क्या वो भी स्कीमा स्टार स्कीमा ही कहलाएगा? नहीं, स्टार स्कीमा में एक ही फैक्ट टेबल होती है. ओके. तो सर अगर उसमें दो फैक्ट हेलो हेलो कैन यू हियर मी? सर मैं अब सुन सकता हूँ आपको. हाँ, प्लीज गो अहेड. हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे मॉडल में अगर दो फैक्ट टेबल होंगे तो क्या हम उसको स्नोफ्लेक स्कीमा बोलेंगे फिर हम? बिल्कुल सही जवाब. स्नोफ्लेक. ये डिफरेंस है दोनों में, क्योंकि स्नोफ्लेक्स में हो सकता है शायद 3 भी हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हाँ स्नोफ्लेक्स में हम 3 या 4 भी क्रिएट कर सकते हैं शायद. में भी श्योर नहीं, मैं इसके लिए देखना पड़ेगा मुझे, बट इतना पता है कि होता है. अब आते हैं रिलेशनशिप के लिए. पावर बीआई में जो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, ठीक है, ये एसक्यूएल का पार्ट है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, दैट मस्ट कवर इन द पावर बीआई. सो आप जानते हो, बट लेट मी जस्ट रिव्यू. प्राइमरी की, सुपर की, अल्टरनेट की, यूनिक की एंड फॉरेन की, पॉसिबल कैंडिडेट की एंड एफके रिलेशनशिप. यू नो दैट वेरी वेल, जस्ट गिव यू द आइडिया. सो यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, देन मूव टू द फर्स्ट. इनर ज्वाइन, कॉमन डेटा, एंड मे बी इन माई सिक्वल ज्वाइन एंड पावर बी इनर. इन सिक्वल यू कैन से inner join. So same thing, only common data will give it to the Power BI. Full join, and we have the next left join and right, you can say right join. So full join, say suppose we have a left join, full data left side का and common data right side का. Left में right table में right full and left common. So this way vice versa. Full में all data. So that is the concept basic. Same we have. If you inner join consider 1 to 1 and full join consider many to many, left join consider many to 1 and right join consider 1 to many. So that is the concept implemented in the Power BI. Okay, so let me show you to make you understand. Nothing is different. Either you can click here or maybe go to manage relationship. Okay. Okay sir. There are 2 ways to do that. Yeah, see this. Here you can see this option, or maybe model tab you can see this option. Okay, manage relationship. Click on that and see this. Usually if you have a good relationship, then click on auto deduct. It will create automatically. But if you wanted to create a new relationship, then definitely go ahead and do it. So country main table and then country. See this, it is giving the already relationship there, but see the 1 to many to 1 means what kind of relationship it is? Left join. 1 to 1 is inner join, and 1 to many right join means right side full data, left side common data, and many to many
full join. Understood? full join. Uh, Yes, sir. Same SQL concept, but only thing display method is different. That's it. Okay, sir. Single and board direction filter. What is a single board direction filter? Now I want sometime it's needed. No, you can follow same concept that I told you. You do not create a board direction until unless it's needed. Okay. So suppose if I filter this table, dynamically filter by the main table too. But if in case I filter the main table, doesn't impact the product table. That is my requirement. So what should you do? You just give the single direction, say this. Single direction. But what happened? This table have a different relationship with this different fact table. So what should I do? So there is a way. This is called enable board direction. So if anyone filter the main table, then automatically this is going to filter it and impact in the second fact table too. That filter is going to impact second table too. And vice versa. Maybe this filter second table then impact the product table and that impact the fact table too. So depend on the situation, create the both a single direction. One limitation here is that if you will create the both directions, you may get ambiguity. You see, sorry, unable to pronounce it. Ambiguity issue. Sorry for the wrong pronunciation, but ambiguity issue is called. So that AMBITY is ambiguity issue. So that whenever you're going to create, it will not allow you to make relationship between them. Okay, that is the problem. So you just make whenever you're going to create, go as per your model. So how would you learn this? Slowly, slowly, when you create the relationship, then you can understand how should I do that. Okay, but main you can follow the single direction until unless you can need it because it's going to is cardinality going to impact your data size. If you I'll show you wait. Meanwhile, you have a single direction. Okay, let me check the size of the data set. Go to the file. Okay, because while accessing this file, are you getting a problem or is this working fine? Have you checked and you haven't confirmed it? Okay, we have the file size is 715 KB. let me take a screenshot. Now I change it to the relationship. Now many sorry, you can say board direction. Board direction. I haven't made it many to many. I just made the one to many and one to many relationship. Let's see what happens. I may save it. One 117,943 bytes. 118. What is it? 118. 100, 1000, correct? 1000 bytes got difference in single relationship. Yes, sir. So if I change the many to many, then what's happened? It will get a lot of take a lot of space. So remember it. Space is very matter for us. Okay. So go to the property and change single direction. I told you don't use until unless you need it. Okay, sir. So have you seen the difference? Yes, sir. Because when we large data set, you know, that time the single byte is matter for us. Yes, sir. Data sets, okay. Since a small data set, you can easily understand, but talk about the larger prospects, so definitely going to impact data size. See this in 3 model, it impacted 1000 byte. If you have a 20 G, you can say 1 GB data, it's going to increase up to 65 MB size immediate, only relationship. So that relationship, always focus on the relationship. Okay, now I got a problem. I wanted to create the we can say waterfall chart, but I don't know. Requirement says you create something different visual that have the multiple layers and the you can say
uh, in your data in view. So how to do that? See this, we have the main table, we have a sales. Okay, so if I select the sales, it gives me the sales value, but I want to see many categories, and I wanted to see country, segment, product, everything wanted to be in one layout. How should I do that? So if I select the country, it will display. If I wanted to segment, perfect. But I wanted to give the one more category, which is let's click on the waterfall chart. One more category, which is product by breakdown, but doesn't allow me. I want to see the breakdown by the product, not by the category, by the category. In breakdown, I wanted to see that, but it is allow only single column. So how should I do that? Either display segment, either display or display month. Any you can pass only one column. So how to handle this? So here comes modeling. Let me show you. I can give the all category together. Don't worry. So let me come to the modeling, and there is a modeling going to help you. So copy it and duplicate it, and going to even use the reference as well. Don't have any problem. So I am going to use waterfall chart. And people ask question. Many I ask, I think 25 people in 200 people, I ask almost person, and they are not able to answer it. Only single way, which is called, let me remove this one. I wanted to keep it as well. Okay, so let change it. Okay, we have all option here, product, country, everything. Now, if I unpivot it, okay, it will come in one column. So can I do that? Yes, let's test it out. I don't want to discount. I don't need discount column. Okay, I need units sold, manufacturing prices, but no, I need only sales. Sales column I require. Apart from another column, I don't need that. Okay, so select sales prices, discount, gross sales also don't need that. Let's delete this one, and a date is needed, so I cannot delete the date. Okay, we have a sales table and we have the 3 columns. So let's select everyone. Power BI allow you to transform your data to column to row level and row to column level both. How? So let's copy it. Let's duplicate it. Okay. So reference it. Here called pivot and unpivot. First we are going to use unpivot. Transform. There are 2-3 ways to do that. Unpivot columns, unpivot other columns, unpivot selected column. You know, self-explanatory. We have options. So just unpivot only selected columns. Okay, I select that. See this attribute and value. It has a label, and as well as we have the values in the row level. See this. The all things come in a one go. So my problem is got solved. But no, I want segment to be divided in the, again same way I wanted to restore it because some modification has been done. Now I wanted to change to the each we can say column level. So I wanted to convert in the column level. So pivot, and I want to sum up the sales. Each label I want to, in government, Canada, everyone I wanted to see that. Say this. It will give the each category by the total sales. That is the important, because sometime when you stuck that and we don't have solution, so how should I fix this? This way you can fix your problem. I know it's not much relevant here, but yeah, I'm giving just idea that how should I do that. So pivot and this is unpivot. I both options given to you. So I'm going to cancel the enable load. So you should not display. So can you suggest me which option should I use here to I can see my respective category wise sales? Can you help me? Should I use Yes, sure. unpivot? Which option should I use it? Sir, first of all, I'll use unpivot column.
unpivot selected columns. हाँ, that's I needed, nothing was required. And this, then close and apply. I need only two value to be display, so I can display that. Maybe 2 3 value can do that, don't have any problem. So now remove product, remove segment. I wanted to give the country, then I wanted to give the where's my attribute column, waterfall chart. Remove it, remove this one, remove, I don't need that. I don't need this column is all information. Why should I do that? Click to sum of cells, then we have the attribute category and value is a breakdown. See this, totally view has been changed. This view cannot achieve until unless you can unpivot it. Maybe you can create more category in that. I'm just giving idea. So you can create more category in that. Okay, dashboard is not a big deal. Dashboard you can arrange 4 visual together, doesn't matter any. Matter how to present. Data presentation is very important. So understood the waterfall. Any doubt? Because let me know, we'll revise once again. Repeat it to you once again. No sir, no doubt. But sir, one more important question, like इस पूरे विजुअल में जो भी हमारे ब्लू कलर के जो भी हमारा विजुअल दिख रहा है, सेगमेंट, कंट्री एंड प्रोडक्ट, तो सर उससे मतलब मैं क्या दिखाऊंगा क्लाइंट को, मतलब ये पॉइंट समझ रहा हूँ। ठीक है, देखो ये मेरा सेगमेंट है। सेगमेंट में क्या था? सेगमेंट में मेरे पास था स्मॉल बिजनेस, गवर्नमेंट, कंट्रीज, ठीक है। तो ये मेरे कैटेगरीज हो गए, 3 कैटेगरीज थी इसमें, अदर, स्मॉल बिजनेस, गवर्नमेंट, 3 कैटेगरी थी इसमें। बट इस डेटा के अकॉर्डिंग 2 ही आ रहे हैं, ठीक है। सो 2 मेरी कैटेगरी है। बट मुझे ये भी देखना है कि मेरा जो डेटा है वो इस सेल्स के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और टोटल क्या है, अदर कॉन्सेप्ट, प्रोस्पेक्ट क्या है इसमें। देखो वाटरफॉल में क्या होता है, पानी ऊपर से गिरता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो किस कैटेगरी में कितना डाउनफॉल हुआ है मुझे ये देखना है। अब मुझे क्या मतलब कि वो स्टेट से हो या कैटेगरी से हो, सेगमेंट से। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए इतना फॉल डाउन हुआ है, ये इतना अप गया है यहाँ से। बट 2 कैटेगरी जो कि डाउनफॉल करे, एक तो हो गया स्मॉल बिजनेस एंड गवर्नमेंट, 2 कैटेगरी में डाउन हुई है कंट्री के अगेंस्ट में। देन अदर पे आते हैं, अदर पे ये है। देन वी हैव पास्को, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ये डाउनफॉल हुए हैं, एंड अमेरिका भी। एंड ये मेरा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की कैटेगरी देते जाएंगे। देखो और प्रिसाइज वे बनाने के लिए इसको हम थोड़ा सा और चेंजेस कर सकते हैं टू एक्सप्लेन यू। इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं और इसमें कैटेगरी ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें मैंने ले लिया, देखो मैंने मल्टीपल कैटेगरी एक साथ ले लिया था, बट मैं एक एक कैटेगरी को लेके चलूंगा तो सही डिस्प्ले होगा। सो मैं लेता हूँ, सेगमेंट को छोड़ देता हूँ एज इट इज, कंट्री और प्रोडक्ट को लेता हूँ, मुझे देखना है कंट्री प्रोडक्ट वाइज। सो मैंने इसको अनपिवट कर दिया, ठीक है। इसमें मुझे कंट्री प्रोडक्ट मिल गया, सेगमेंट वाइज रहेगा। सो क्लोज एंड अप्लाई, देखते हैं किसके अकॉर्डिंग सही बैठता है। देखो मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है समझाना कि क्या है, क्यों फुलफिल कर रहा है, वो मेरा ऑब्जेक्ट है। हाँ, डेटा में ये नहीं बता रहा हूँ आपको कि डेटा कैसा है, ठीक है। ये मैंने ले लिया टोटल सेल्स, ठीक है। देन इसमें मुझे होगा एट्रीब्यूट, इसमें क्या होगा, कंट्री और प्रोडक्ट 2 आ रहा है, ठीक है। ये कंट्री और अपडेट इन टोटल है ये। इसका भी हमें सब कैटेगरी करना है, तो ब्रेकडाउन पे जाएंगे। तो ब्रेकडाउन क्या है, वैल्यू, इसका ब्रेकडाउन करना है वैल्यू। देखो समझ में, कंट्री, अदर, देखो इसमें ना डिक्रीज इंक्रीज 2 तरह की शॉर्टिंग होती है। तो मैंने कहा असेंडिंग में कर दो मुझे, तो ये देखो ऐसे दिख रहा है, ये चढ़ रहा है, ये उतर रहा है। बट यूजली अगर मैं डेटा को देखूं किसके बेसिस पे लेना, मैं एट्रीब्यूट के बेसिस पे ले रहा हूँ, तो ये ऐसे एक्चुअली ऐसे होना चाहिए। सो डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसा है, वैसे मॉडल कैसे। बस मेरा अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है कि ब्रेकडाउन कैसे करेंगे वो आप समझो बस, ठीक है सर। हाँ, पानी यहाँ पे चढ़ा, यहाँ से नीचे आ रहा है, दैट्स इट, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो 2 नहीं 10 कैटेगरी क्या मैटर करती है, मैटर नहीं। मैंने 2 कैटेगरी इसलिए लिया है ताकि समझाने में आसानी हो, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे चलें, कोई डाउट? नो सर, आगे चलते हैं। हाँ परफेक्ट। अब आ गया नेक्स्ट हमारे जो है मॉडलिंग में, ये तो हो गया एक के लिए, दूसरा चलते हैं, इसको लिख देते हैं वाटरफॉल।
मैं स्लाइसर नहीं बता रहा हूँ, अभी आपको चार्ट ही बताना है। अब मेरे पास आ ठीक गया, है सर। इसी डेटा में मुझे एक प्रॉब्लम है। देखो एक प्रॉब्लम स्टेट बता रहा हूँ। इस डेटा को मुझे दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, कंट्री और सेल्स में, ठीक है। सो देखो, एक इसमें प्रॉब्लम है स्टैक बारम की, सॉर्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें। और सॉर्टिंग के लिए आपको एक वर्जन डाउनलोड करना है बिलो वन, और वो 2020 के वाला वर्जन अगर लोगे तभी आपका सॉर्टिंग इसमें सही आता। मैंने जब भी ये रिपोर्ट बनाई है, इसमें ये प्रॉब्लम आएगी। देखिए क्या आएगा। सो मैंने कहा सेल्स और एट्रीब्यूट, और इसको मैंने चेंज कर दिया 100% स्टैक बार चार्ट में। ये देखो आप, इसमें परसेंटेज दिख रहा है। 100% स्टैक बार चार्ट ऐसे आना चाहिए ना। एंड देन वी हैव द लीजेंड which is segment. No, segment should become here. मुझे तो परसेंटेज में दिखाना था, why display like this? And legend should be 1 second value. Perfect. But we have too many values now. I wanted to control it with the two. I want 1 and 2 rather than I don't need them. ठीक है, मुझे बस दो ही कंट्री का डेटा देखना है इसका। इसके चार्ट में मुझे देखो, इसमें मुझे डिस्प्ले दी डेटा लेबर। डेटा लेवल, लेट इनेबल दैट। एंड कलर थोड़ा सा बार को चेंज करें ताकि व्यू बेटर दिखे। एंड ब्लैक, नॉट ये ज़्यादा आँख पे लग रहा है। हाँ परफेक्ट है। सी देख, इसमें देखो 48%, 33%। इट शुड नॉट बिकम 33 शुड बिकम ऑन टॉप। एंड ये इसको शॉर्टिंग करते हैं, एक्सिस सम ऑफ असेंडिंग ऑर्डर 32, 39, 39.9, 36. This should not become on the, this should come on here. तो ये प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हमें अलग अलग मेजर्स बनाने होंगे, ठीक है। और उस मेजर्स को हम तो हो सकता है। तो चलो कोशिश करते हैं इसमें मेजर बनाते हैं इसका। सेल्स, कैलकुलेट सम, calculate some cells. We have the waterfall cells, close. Then we have a filter and waterfall. Then we have the column next is value, correct. Value we need to pass the, whatever value pass, let me do it later on. The value is, value is AMAR. Next pass it to copy, apply. Simple formula, that's it. And next measure, we have the Canada cells. Pass the Canada. Spelling perfect. Let's check it. What happened? इसमें मुझे तो जब भी मैंने I must downgrade the version, then I fix it. Otherwise, never fix it yet. I already surrendered in that. Okay, let me close it and pass the Canada and another one for two cells. Okay, and now we need to pass the attribute and pass the legend here. I think legend should be valid for me. Two options is correct. What value I passed?
segment. Segment. So again this, let me try to filter it out by Canada cells by ascending order. 67, 60.23, 61.67.59. No, that is not coming in as intended. I need to find the way, but yeah, whenever I download this version, it was working fine. 66, 61, 63. I created that, okay, but I always downgrade the version, means powerbi version. I downloaded that, use the previous and 2020 version, then it is working fine. So we need to find download from the portal, then I do that. Here this visual doesn't work as intended. I searched many websites, they already raised the ticket and that, and they're trying to fix it out. That how should I fix it? I don't know. Still Microsoft working on it. So if anyone push you, say that we'll try to fix it, but yeah, an older version you can fix it. Remember that. Which visual? Visual image 100% stack bar chart. Okay. Okay, sir. Okay. Let's move to the next part. And even obviously few people knew it. So who people knew, they never asked this question. Suppose I'm using we can say two models we have. Okay, let's move to the next part. Merge, if you have any doubt here, just let me know. Okay, so let's move to the next part, which is rows. Row. Now, what happened that I need a data. Okay, my data has an error, and I want the error should be available in my report. And you asking that why error should we keep it? Yeah, sometime we need it. We need that. But why and when we got a problem, then realize it. Okay, I'll tell you the story. What happened? The value has we can say created the value column in sales column. Somewhere some user entered we can say A in A alphabets, and it was by mistake done by the sales team. So data reach out to the system. Okay. So my manager told me that where we have the A must disappear in the report, and I don't know how many column it was. What should I say? Should I say I cannot work in it? If I create the value column, if I create the text, it should not be worked. But I must create the sales column should be in value. So what should I do? I must create the value. And what's I selected? Keep errors. I select that. So what happened? All errors would be appear here, and I understood how many errors we have. And I can check by, there is a way in column distribution. And you can check distinct, unique, and error. It will display the error too. So you can easily identify that. And if you're looking for the column profiling, click on that, see the column profiling, count, error, empty, distinct, unique, none, zero, max, mean, average, everything can appear in each column. Statistics will be available in Power BI. So you can use it when you need this option. Your next question to me. Like suppose I know it has a 700, 600, it doesn't matter. Either you can check manually, you can do that. But you have 1 lakh row. Will you able to check that? No, you cannot. So what should I do? You can use this function, use it. How many duplicate has, how many errors we have, so you can check it. Meanwhile, I uncheck that. Okay. Column distribution. So okay. Now Sir, how about column quality? column quality, yeah. Same thing that I told you, no? Error, everything will appear here. Okay, okay. Hmm. I told you can take the error percentage and all valid how many errors we have, so you can check that. So okay. I am actually showing the keep row pattern here. I want only top row can be displayed. I don't want to other values, so I just enter the top 10, nothing else. Top 10. Perfect. No, suddenly remember I made mistakes. Let me restore it. So just click on delete that. It will restore it. Now I realize no. I wanted to keep 200 rows only, top 200 only. Perfect. I did it. Oh, I realized no, I made mistakes. Let's delete once again. I want in a bottom 10 rows. So bottom 50 rows I wanted to keep it. Bottom 50.
I realize I made mistakes. No, I wanted to only change the bottom 10 only. So let's do bottom 10. Oh, that's okay. But yeah, one mistake I another did it. I don't want to delete the top 10 and what I want to delete by range. Okay. So first row from 1, I want to delete till 5. Number of row can be 5. So as per your understanding, how many rows can be left? 5 rows. My understanding says 5 rows can be left here. Let's press OK. Let's test it. 5 rows is left only. So if any situation comes that you customize the row, can you able to do that? Yes, you can. Okay. Now I just keep it as it is. I don't want to delete that. Let's move to the next row, reference part. Okay. Why I'm getting with the rows second row, remove rows option. Why I'm giving this option, because you can understand easily that which concept is going, which option it has. Okay, so you can realize this way. Okay, now next action is come to me, which is remove. Okay, any doubt in keep rows? No, sir. Two option I left it for you. Keep range in a row and bottom. This one, oh sorry, this one covered. This one you can test your in. Let me know if you get ठीक है the सर. problem. Okay. Okay. Perfect. Now situation arise. Say keep remove top rate top 10. Otherwise I continue. So let's remove the top 10. Now we have 700 rows. It should be removed top 10. So perfect. Top 7 means top 10 has been removed. Now I got really low. It's bad. I forgot to add the top 10. So you can customize as per your own method. Bottom 10 I wanted to release that. Oh, bottom 10 I want to do that. Now 680 should be appear here. Okay, 680. Perfect. Now that's good. But I want to select from first row. Number of row can be keep and rest can be deleted. First row should be 10. Okay. Number of rows can be removed is we have the 600. Okay, 600. And number of rows can be keep. How many can be left? When it start from the 10, we have 80. Okay, so 80 rows can be keep it. How many rows can be keep it? 80 rows. Overall my mean is that you can customize your own. Okay, don't worry, you can use as per your need. Okay, one option I'm not going to use it. Remove blank and remove error. You can test your error in. Let me know if any problem. Remove already use it. Okay. Okay, sir. Okay. Now, in any situation, data must be arranged. So we have the option A to Z and Z to A. You can arrange it and save it. Hi. सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा. हाँ, please go ahead. सर जैसे यहाँ पे रिमूव रोज में रिमूव डुप्लीकेट लिखा हुआ है. हाँ. अगर सपोज मान के चलते मैंने डिस्काउंट बैंड को ही सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसमें तो सिर्फ मेरे ख्याल से डिस्काउंट बैंड में 2 ही कॉलम्स आई थिंक, 2 ही वैल्यूज हैं, हाई और लो आई थिंक. अगर मैं हाँ तो अच्छा बाकी भी डिलीट हो जाएगा. ओके. But you can control it as well. How? Okay. Let me show you. Control A, select in middle, Control A, then use remove duplicate, and nothing is impacted. Okay, so depending on the situation, you can do that. Obviously, you know that if you are creating a SQL query and group something, what happened? As per the grouping condition, okay, data is going to distinct are going to remove or keep it. So remember it. Okay. Now. Okay. Splitting column, you can test your splitting. Let me know if you can get problem. Major part is that I want to summarize the data. So from here, grouping in Power BI. Because most the things I'm going to telling you this very important, and please try yourself. Maximum you can work on modeling. You can say like suppose if you have a rank 10, okay, so my understanding says if you understood the, we can say modeling prospect till 6, then you can do your report whatever you want. But you don't know the modeling, you cannot work in the report. Major people working on the DAX prospect, they are not working in the model. Tell me where is the DAX required? Nothing is required here. I'll show you how.
I want data to be summarized by the segment. I'm sorry. Oh, we don't have a segment column here. Okay, we have segment ID, don't worry. We can merge it. So delete that, okay? I want to only summarize segment. Let's merge it. Merge by the, we can say product wise total. So product ID, wait, product ID. Shall I show you? Wait. Product name. Perfect. So I got the product name here. Product name. Okay. I created capital because it's a case sensitive. Yeah, remember this is a case sensitive. So whenever you can say you change any letters, it will create the different column name. It doesn't appear that. Okay, it's considered the new column. If you create the different, you can say character like small a and capital is a total difference in this case sensitive part. So now I want to summarize this data by told cross sales and sales can be summarized by the product name. So what should I do? So we have option group by. Okay, click on group by. I wanted to give the grouping by, select advanced option, group by product name and product country ID both. Country ID. Two category I want that. Okay. So think about let me and select total sales and then select gross sales. And here we need sum, average, medium, everything is available. Okay, even all rows as well. So I want sum. Which column? Sales column. Then the sum, gross sales column. Say this. Your data is going to, we can say, summarize it. Obviously, we need to categorize your data. So it will going to, we can say, help you while summarize your data. So summary prospect, I know I use the two category. But if I use only one category, which is product name. So let me test it this way as well. So duplicate, grouping by product. Product one. DUC. So let's remove it, remove it, and remove it, and remove it. Remove discount band, remove the other column too. I need only product ID. So let's begin with that. Group, what I need to do, product ID, and then total sales. Sorry, select advanced option. Advance. Advanced total sales and gross sales. I'm sure if I do this thing in, we can say, in my live free session, no one is going to join my live session. I'm honestly saying, they do not, they don't know what is the root cause of it. But yeah, when they start working, they realize that what is the, they just come out every day and say this. We have summarized it. We have how many table, how many rows we have? We need to summarize with the 3 rows. Is it DAX part? Yeah, you can do that. But here we can do that in modeling. So why we are not using that modeling part? Okay. Okay. So I think I cover the maximum part. Okay. So next part will cover the data. We can say data type and header rows and append. Append part is left. Append will get Okay. suppressation because there's a lot of things to consider. Okay. Mhm. Still we need to finish this one. Still we can say where is the modeling part? Yeah, edit query transformation is still on this part only. I haven't reached out to it here. Okay, so you can try your end and let me know if any problem. Okay, ठीक है सर. any doubt? अभी तो नहीं सर. ठीक है, perfect. Wait 1 second.